Welcome to the Immigration and Resettlement Show. आप सबको वेरी वेलकम करते हैं आज के शो पे, इमिग्रेशन और रिसेटलमेंट शो पे. आज today we have the HMB team over here with us. Firstly, reintroducing Dr. Hilia Begin and Mr. Amir Ali Arab, and we have the founder of the HMB firm, Dr. Hilia Begin, and the investment and development manager, Mr. Amir Ali, over here with us. How are you doing, guys? Hi, how are you? Fine, very well. What about yourself? Hello everyone, I'm Amir Ali Arab. I'm the manager of investment and development of HMB Canadian Immigration. Perfect. Dr. Hilia, how are you doing today? I'm good. How are you? Thank you for Not asking. too bad. So, without wasting any time, so today we'll be discussing a little about the entrepreneurship programs. So, let me just explain this to the viewers. Nazreen, आज हम लोग बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स के बारे में कि किस किस किस्म के एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स कनाडा ऑफर कर रहा है और उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या ज़रूरियात हैं, उस पर हम फर्दर बात करेंगे डॉक्टर बेगन से. सो डॉक्टर बेगन, what kind of categories of entrepreneurship program does Canada offers? Sorry about that. No, that's fine. We have Ontario Stream program, Okay. and also we have PNP provincial nominee program as well. ओके. सो डॉक्टर साहिबा बता रही हैं कि दो किस्म के प्रोग्राम हैं, एक ऑन्टेरियो स्ट्रीम प्रोग्राम है और एक ऑन्टेरियो PNP एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है. आइए इनसे पूछते हैं कि इनकी डिटेल क्या है. सो डॉक्टर हीलिया, this program the two programs that you've mentioned, what are the requirements and what kind of candidate would be a fit for either programs? For both programs, first of all, they have to be under 50, the age categories. Okay. And also between 60 months, they have at least have to have 2 years of management experience. The most important thing is this. Okay, and that is for the? It doesn't matter for both categories I just mentioned. Okay. Even for the Ontario Stream program and as well for the provincial nominee program. Okay. नाजरीन, डॉक्टर बेगन ने हमें बताया है कि दो किस्म के प्रोग्राम्स हैं, एक ऑन्टेरियो स्ट्रीम प्रोग्राम है और एक PNP एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है. दोनों में जो सबसे वाइटल चीज़ देखी जाती है वो है कि आपकी एज 50 से कम हो और आपके पास 2 साल का मैनेजमेंट एक्सपीरियंस हो कि किसी कंपनी में आपने मैनेजमेंट लेवल पे काम पहले से किया हुआ हो. Now, with the second question. Now, let's just say that both of these programs, the categories, how much, for example, today, if somebody is interested in Ontario Stream or the PNP entrepreneurship program, how long does it take to process, and somebody from outside the country would want to apply and then come into Canada? So what's the timing of the process and what will the process going to be looking like? For both of them, usually it takes 90 days to get the approval from the province. Once they approved, and then we will apply for the visitor visa as well as work permit visa. Okay. First, we have to apply for the visitor visa because they have to come and visit Canada. And at the same time, once they get here, we can apply for the work permit. And then once they here, they have to start opening their business here. The business activity? Yes, within 20 months. Okay. नाजरीन, तो डॉक्टर बेगम ने यहाँ पर हमें बताया है कि कोई भी जो आइदर बोथ ऑफ द प्रोग्राम्स में से जो भी ऑप्ट करता है
उनको पहले विजिटर वीज़ा लेके कनाडा आना पड़ेगा, फिर यहाँ पर उनके लिए वर्क परमिट अप्लाई होगा। वंस उनका वर्क परमिट अप्लाई होता है और उनके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन उनकी कंप्लीट होती है, तो उनके पास 20 महीनों का टाइम होता है वो अपनी एक्टिविटी को शुरू करने के लिए। और एक और बात कि 90 डेज का प्रोसेस होता है आपके बिजनेस अप्रूवल लेने के लिए। So basically what I'm getting from your answer is that it takes around 90 days to get the business plan approved. Yes, from Okay. Service Canada. So yes. what will be required for somebody to apply for this visa is a business plan, is there bank statements, what kind of things that they need At to the provide? beginning, no. There is an application. We have to send it, and then we have to show them based on which province they are going to apply, and then how much you are going to apply, how much assets, and basically just the assets they have in their own country. And Okay. if they have a management experience or they own their own business back home and they're running their business back home. ओके नाज़रीन, तो यहाँ पर डॉक्टर साहिबा ने हमें बताया है कि हर एक की यूनिक सर्कमस्टांसेस के बेस पे उनका प्रोसेस आगे बढ़ता है कि किसी के पास कितना एसेट्स हैं, कौन यहाँ पर अपना किस तरह का बिजनेस यहाँ पर ऑपरेट करना चाहता है। तो बेसिकली पहले वो अब बिजनेस की अप्रूवल लेते हैं और फिर आगे इस चीज़ को प्रोसेस किया जाता है। सो डॉक्टर बेगन, इफ वी टॉक अबाउट ईच कैटेगरी, Yes. like let's just say the entrepreneurship program and the Ontario sorry, come once again, Ontario Stream. Ontario Stream program. Once they apply for this, what are they getting? Are they getting a permanent residence with that, or are they getting work permits for that? First, they will apply for the work permit because the main applicant has to run the business for 20 months. After that, after they and then they have to hire at least one Canadian citizen and 3 to 4 non-Canadian, like permanent residents. And then after 20 months, we can apply for the permanent residence. ओके नाजरीन, तो यहाँ पर डॉक्टर साहिबा ने हमें बताया है कि लाइक बेसिकली कोई भी बंदा जो इन प्रोग्राम्स के तहत कनाडा आके अपना बिजनेस शुरू करता है, सो उनको शुरू करने के लिए यहाँ पर 20 मंथ्स अपना बिजनेस रन करना पड़ेगा। जब वो अपना बिजनेस 20 मंथ्स रन करेंगे, जिसमें वो एक कैनेडियन सिटीजन को हायर भी करेंगे और जिसमें वो क्या नाम है 4 नॉन सिटीजन लाइक जो पीआर पे हो, वर्क परमिट पे, उनको हायर करके अपना एक बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे। उसके बाद फिर पीआर के लिए आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आप फर्दर मोर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो डॉक्टर बेगन, द नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the financial requirements for both the categories that we're talking about? Okay. For the Ontario Stream program, whoever wants to apply inside of GTA, they have to show the asset of 800,000, and they Okay. have to invest 600,000. But outside of GTA, they have to show all the assets worth up to 400,000, and then they invest 200,000 Canadian. ओके नाजरीन, तो यहाँ पर डॉक्टर बेगन ने हमें बताया है कि यहाँ पर जब आप लाइक विद इन GTA, ग्रेटर टोरंटो एरिया, अगर यहाँ पर आप एंटरप्रेन्योर वीज़ा स्ट्रीम पे अगर आप इधर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आपको विद इन GTA आपको $8 लाख के एसेट शो करने हैं और $6 लाख कैनेडियन डॉलर्स आपको इन्वेस्ट करने हैं। और जो दूसरा PNP प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, उसके लिए आपको 6 लाख के एसेट शो करने हैं, जिसमें आप लोगों ने $4 लाख कैनेडियन डॉलर इन्वेस्ट करने हैं। ओके, सो once a person, Dr. Began, once a person applies for the like entrepreneur, like the Ontario Stream or the PNP program,
Before that, Shah, would you mention where we are? What is the phone number? The direct phone number? You already forgot about. You were asking like I was like I was trying to get as much knowledge as we could, so our viewers can benefit from that. Anyways, ladies and gentlemen, today we are here on Voice of Toronto with the HMB Canadian immigration firm. We can be contacted at 416-836-9911 and our toll-free number is 1-888-855-5462. We are live here on Voice of Toronto. You can be contacted at 905-670-4114. So, like I'm a little went back on my questions now. So, Dr. Begin, because of the viewers. Yes. So ladies and gentlemen, we have a sea of knowledge over here with us. Take as much as you can. It's absolutely here for everyone. Now, so whoever has applied for these programs, let's just say the Ontario Stream or the PNP Entrepreneurship Program, will they be allowed to bring their family with them, their employees with them, or how does it work out? The employees, no, but the family, yes. The immediate family, like spouse and the children, they can bring them with them to Canada. Okay. So, नाज़रीन, यहाँ पर डॉक्टर बेगन ने बताया है कि जो भी यहाँ पर कनाडा में आके अपना बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ओंटारियो स्ट्रीम या के पीएनपी एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं, तो उनको सिर्फ उनका और उनकी इमीडिएट फैमिली लाइक उनकी वाइफ और उनके बच्चों का वीज़ा मिलता है. एम्प्लॉयज़ का वीज़ा आप लोगों को यहाँ पर इस चीज़ में ऑफर नहीं होता. So Dr. Begin, once a person gets the entrepreneurship program, like let's just say Ontario Stream or the PNP program, how long does it take for them to become Canadian citizens, like after getting into this program? After they receive their permanent residency, they can apply within 2 years. Why? Because when they become a Canadian citizen, whoever wants to apply for it, they have to be present in Canada within 1,097 days, right? But because they've been here before that, so they just counted 1 year for them, and then they can stay another 2 years, and after 2 years they can apply for their Canadian citizenship. नाजरीन, तो डॉक्टर बेगन ने हमें यहाँ पर बताया है कि कोई भी यहाँ पर जब कनाडा में आते हैं और आके अपना वर्क परमिट लेते हैं या फिर उसके बाद अपना बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं एंड उसके बाद जब पीआर आता है, तो पीआर आने के 2 साल बाद आप लोग एलिजिबल होते हो अपनी नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करने के लिए. आपके बेसिकली 1097 डेज इज द बेंचमार्क. इतने दिन आपके होने चाहिए कनाडा के अंदर अगर आपको अपना कैनेडियन सिटीजनशिप आपको अगर अप्लाई करनी है. बट अगर उसके सर्कमस्टांसेस है बेस्ड ऑन आपका वर्क परमिट से कब आप परमानेंट रेजिडेंसी पे आते हैं. लीजिए, साथ में हमारे व्यूअर की कॉल आई है, इनकी कॉल लेते हैं. Hello and welcome to the show. My name is Alan. I have a question with Dr. Helia. Yes, Mr. Allen, please. So under Ontario Entrepreneur Scheme, the Ontario Stream immigration program. Yes. If, for example, if I want to come under this program, I know that I have to do some investment, as she said. But is there any business plan? Like how it operates? Like I just go and buy the the company or anything, and that's it. Or is there any process like I have to submit the business plan, I have to submit documentation? That's my first question. The second question is, what happens if that business won't work out? Like after 6 months I have to close it down because of some reason, then what will happen? Okay, thank you so very much for your question. We'll be responding, and please stay tuned with the program. Okay, thank you so much. You're welcome. Bye. Dr. Helia. What was the second question he had? Second question was that if he has a business and it gets closed down for any unforeseen circumstances, what will happen then? That's the second question.
Okay, the first question, yes, we have our team. He's the manager of the department. He will help them for the business plan. He can help them to show the business, and then we will market value the business. And obviously the most important thing is, if the business is the running business, an existing business, we will go through the financial statements, and we will go through their revenue, income revenue, if there is no bankruptcy or anything on that. And the second question, I don't understand why he's asking this. Obviously, whoever wants to be a permanent resident in Canada, based on this category, they cannot shut down their business at all. Okay. Yes. So नाज़रीन, यहाँ पर हमारे कॉलर ने आके हमसे सवाल किया है कि क्या यानी HMB लाइक फर्म जो है, क्या वो क्या फराहम करती है इन प्रोग्राम्स के लिए? तो यस, हम लोग आपको पूरी कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस ऑफ़र करते हैं। हमारे पास हमारा मिस्टर आमिर अली यहाँ पर आके आप लोगों को हर तरह का बिजनेस प्लान, बिजनेस मॉडल, बिजनेस एवेल्यूएशन, हर तरह की आप लोगों को सपोर्ट देंगे और आपको बिजनेस देंगे। आइए नाजरीन, अब आया है ब्रेक का वक्त। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हमसे जुड़े रहिएगा, आपको थोड़ी देर में मिलते हैं। थैंक यू। सुकून कैसा है बता नहीं सकता, सब घर वालों का भी यही हाल है। खुशी जैसे रूह में उतर सी गई हो। सच पूछें तो ये मुमकिन बनाया HH होम रियल्टी ब्रोकरेज की अनिला जहरा ने। अपने ख्वाबों का घर आप भी पा सकते हैं, बस एक फोन कॉल और जिंदगी आसान। Call Anila Zehra at 905-462-0133. Hi, my name is Sandeep Singh. I'm the owner of Heritage India Restaurant. It's a fine dining restaurant with tradition and culture. अगर आप पुरानी दिल्ली की ट्रेडिशन, कल्चर और माहौल को एंजॉय करना चाहते हैं खानों के साथ, तो प्लीज़ आएँ हेरिटेज इंडिया, 485 मेन स्ट्रीट, ब्रैम्पटन। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ यहाँ आएँ, आकर के हमारे खाने का लुत्फ़ उठाएँ। और अगर आपके यहाँ किसी तरीके की कोई पार्टी है, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बेबी शॉवर, तो हमारे यहाँ डिफरेंट हॉल्स भी हैं जिनका आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं हूं तारिक खान, आपका फैमिली रियल्टर इन GTA। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं, रेजिडेंशियल या कमर्शियल, तो मुझे कॉल करें। सेल और बाय, कॉल दिस गाय 647-787-7400। Muslim Welfare Canada has made a concerted effort to lead the fight against child labor, poverty, and illiteracy in third world countries through the generous support of our donors. Both girls and boys receive free, good quality education. Help educate a needy child for just $1 a day or $30 per month. Donate generously. Call 1-866-754-3111
or visit mwcanada.org. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ETN Travels ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਇੱਕਦਮ ਸਮੂਥ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਆਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਪੈਕੇजेस cruises ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ETN Travels ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਨੀਡ ਲਈ one stop solution 2 locations to serve you Brampton and Mississauga. ETN Travels serving you from 2 locations, Brampton 905-463-1301, Mississauga 905-463-1304. Ladies and gentlemen, welcome back to the second part of the show. We are on Voice of Toronto, representing HMB Canadian Immigration Firm, here with Dr. Helia, Amir Ali Arab, and myself, Shah Nawaz. Welcome back to the show, guys. So we are live on Voice of Toronto. HMB Canadian Firm can be contacted at 416-836-9911. Our toll-free number is 1-888-855-5462, and we are live on the show, so you can call us and ask any question that you have at 905-670-4114. And we have a caller. Hello and welcome to Voice of Toronto. हेलो जी, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ सर, आप सुनाएं? जी मेरा आपके गेस्ट से सवाल है जी। आपका प्रोग्राम देख रहे थे कि आप इनसे कहेंगे कि ये जो प्रोसेस है जी जी सेल्फ स्टार्टर इमिग्रेशन का और एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन का जी जी इसके स्टेप्स क्या हैं, जरा स्टेप्स जरा हमें समझा दें, क्योंकि हमें फैमिली में हमारे कुछ लोग इन्वेस्टमेंट है उनके पास, इमिग्रेंट करना चाहते हैं, तो जरा उसको स्टेप्स बता दें। एज कितनी होनी चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, और जब एप्लीकेशन आप लें उसके कितने टाइम उसमें कितना लगेगा, आया कि उनको कनाडा में पहले आना पड़ेगा या वो सिर्फ लैंड करेंगे एज एन इमिग्रेंट ही या वर्क परमिट के ऊपर शुरू में, तो एक पूरा प्रोसेस जरा समझा दें ताकि उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आपका क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है। आप प्लीज हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हम आपका भी आपको जवाब देंगे। एजेस जो है वो कितनी हो सकती हैं, जो डिपेंडेंट बच्चे हैं वो भी जरा प्लीज बता दें। जी जरूर सर, आपके सारे सवालों के जवाब अभी। और इनका नंबर क्या है इनके दफ्तर को राब्ता करने का? सर 416-836-9911 हमारा लैंडलाइन नंबर है। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-888-855-5462। आप इस पे हमसे राब्ता कर सकते हैं HMB कैनेडियन इमिग्रेशन फर्म पे, एंड हम आपकी हर तरह की हेल्प करने के लिए हर वक्त रेडी होते हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी, आप जरा प्लीज इनसे जवाब लेके दे दीजिए। जी 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 सर, मैं अभी आपका जवाब लेके देता हूँ, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग सर। So, Dr. Begin, we have a very interested gentleman over here with us, and then he is asking a few details about the categories that we spoke about. So, the first thing the gentleman is asking that he needs some clarity, that what are the steps, step-by-step process, that because he goes like he has a few relatives, they are interested in migrating over to Canada on the entrepreneur programs, either it be PNP entrepreneurship program or maybe Ontario Stream entrepreneurship program. Yes. So it goes like, for example, tomorrow we have contacted you. What will you require? How long is it gonna take? What is the age? What kind of experience and age is required? And what are the ages of the kids that are eligible for migrating into Canada? Okay. Slowly. You're asking too much questions at the same time. Yeah. Okay. First, he wants to know that the age. Yeah, age and experience. Okay, age would be
The maximum would be 55 would be the best candidate for this kind of program. If they want to apply under entrepreneurship program, the PNP one, it doesn't matter. PNP or the total program calls entrepreneurship program. So whoever wants to apply, at least they have to have 60 within 60 months. They're supposed to have 2 years of business management experience, or they have the ownership of the ownership of any kind of business in their own country. It depends what kind of experience they have, and based on their experience they can choose what they want to do in Canada, what kind of a business they want to run. So let me just explain the first step of this. Okay, so नाज़रीन, जो सवाल अभी हमसे पूछा गया उसका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का हम लोग आंसर दे रहे हैं कि मैक्सिमम एज जो है वो है 55 आपको एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स के लिए, either may it be like Ontario stream, either may it be PNP, उसकी जो मैक्सिमम एज है वो है 55. दूसरे नंबर पे ये बात है कि जो भी यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के में यहाँ पर रीलोकेट होना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर उनके पास कम से कम 60 मंथ्स के अंदर 2 इयर्स का मैनेजमेंट एक्सपीरियंस चाहिए होगा. अगर ये नहीं है तो एटलीस्ट वो किसी लाइक 6 मंथ्स किसी बिजनेस में ओनरशिप हो बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया. फॉर एग्जांपल, जिस तरह का हमारे कॉलर ने भी हमसे सवाल किया कि किस तरह के लोग, यानी किस तरह का प्रोसेस होगा, तो हर इंडिविजुअल का एक अपना एक क्वेश्चनेयर फॉर्म आता है, उसमें वो सारी डिटेल्स फिल करके देते हैं और उसके बेस पे उनके लिए कितना टाइम लगेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, वो उस बेस पे हम लोग आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करके उस प्रोग्राम पे हम लोग ऑप्ट करेंगे. नाउ डॉक्टर बेगन, the other part of the question is, the gentleman was asking that what would be the time frame for processing the visa. Which visa? The visitor visa? No, the entrepreneur program. Somebody to come over here with their family. What will be the time frame? No. I just want you to be very specific in this question. For the visitor visa to come and start their work permit, we like change the status to work permit, or they already in here and then they want to apply? No. Let me rephrase the question. Okay. Because as the gentleman asked, he goes, for example, if his friend tomorrow wants to call you. Hello, Dr. Began. For the whole process. Yes. As I mentioned at the beginning, that once we send the application and we get the approval, and then it depends on the time frame of which country they are applying. Most probably with 90 days it takes for the approval. Yes. Okay. So Nazreen, so जो अगर लेट्स जस्ट से कि कोई शख्स हमसे रब्ता करता है और हमसे प्रोग्राम किक स्टार्ट करते हैं कि जी हमें ये प्रोग्राम स्टार्ट करना है, सो बेसिकली 90 डेज इज द टाइम फ्रेम कि हम आपके बिजनेस के लिए अप्रूवल लेकर आते हैं. आपके क्राइटेरिया पे बेस करता है कि आप पहले यहाँ पर विजिट वीजा पे आते हैं, फिर उसको वर्क परमिट में हम लोग चेंज करवाते हैं, फिर उसके बाद जब आप 20 महीने बिजनेस शो करते हैं, अपना बिजनेस रन करते हैं, और उसके बाद आप क्या नाम है अपना PR प्रोग्राम पे जाते हैं. नाउ डॉक्टर बेगन, देयर इज अनदर क्वेश्चन द जेंटलमैन आस्क्ड वाज, is he like if somebody wants to buy an existing business, yes, are they allowed to do so? Of course they can. सो नाजरीन, यहाँ पर डॉक्टर बेगन हमें बता रही हैं कि अगर कोई इसी प्रोग्राम के तहत कनाडा मूव होते हैं और वो कोई चलता हुआ और ऑलरेडी ऑपरेटिंग बिजनेस खरीदना चाहते हैं, तो वो अपना बिजनेस खरीद सकते हैं और उसी बिजनेस को आगे फर्दर एक्सपैंड भी कर सकते हैं.
Yes, because I already explained it that Mr. Arab here to negotiate for the existing business, and then he will do feasible study on the business. Okay. Yes. सो नाजरीन, यहाँ पर हमारे पास हमारे कलीग बैठे हैं मिस्टर आमिर अली अरब। ये बेसिकली हमारे इन्वेस्टमेंट्स एंड डेवलपमेंट को देखते हैं। जो भी हमारे पास यहाँ पर कोई इस प्रोग्राम में आते हैं तो हमारे पास आगे फर्दर मोर सर्विसेज भी हैं कि अगर उनको बिजनेस अपना स्टार्टअप करना है तो पूरी प्रोग्राम में सपोर्ट मिस्टर अरब आपको करके देंगे, पूरी फिजिबिलिटी स्टडीज़ बना के देंगे, पूरे बिजनेस एवेल्युएशन करके देंगे, बिजनेस सेटअप करके देंगे और आपको एक स्मूथ स्टार्ट की तरफ लेकर जाएंगे। So now, once again, ladies and gentlemen, we are on Voice of Toronto, representing HMB Canadian Immigration Firm. We can be contacted at 416-836-9911. Our toll-free number is 1-888-855-5462. And we are live. You can call us for any questions that you have live over here. So, moving forward, Dr. Helia. Now, is there any point system for these entrepreneurship programs, such as that they have to score certain points and certain requirements they have to fulfill in order to get the work permit or the approval or the whole process? Could you please explain that? Yes, of course. The minimum is 35 points. Based on their age, their education. The minimum education is 2 years of college or any diploma. Also, the job experience is very important. Management experience. Mm-hmm. Also, the English ability test. Okay, so that was my next question, by the way. Yeah. That what kind of English language eligibility would they be requiring? Yeah. We're talking about IELTS test, right? The CLB it's 4. Okay, so the required is 4 band. Yes. Okay, so Nazarene point system hai, our minimum was 60 points, right? For the point system 35. So Nazreen, 35 points आपने स्कोर करने हैं, जिसमें 2 साल का आपका डिप्लोमा या कॉलेज आपका एजुकेशन भी उसमें शामिल है, और इंग्लिश टेस्टिंग सिस्टम्स में आपको 4 बैंड मिनिमम चाहिए इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होने के लिए। नाउ डॉक्टर बेगन, what businesses? We have another caller right now. Let's take the caller and then we go back to the question. Hello and welcome to Voice of Toronto. Hi, I have a question for Dr. Helia. I'm watching her channel. Okay, thank you very much for that. Can I ask my question? Sure, please go ahead. I would like to know that I invited someone for 4 times for visitation, and 4 times. Hello? Can you please reduce the volume on the TV, please? Yeah, I have a question that I invited 4 times somebody from my country to come to Canada, and 4 times he was refused. Do I have any chance, just for the visitation, do I have any more chance to invite him, or what do I need more provide to the Canadian Embassy that to prove it that he's coming and he's going back to Iran? He has a wife, he has a house, he has money in his account, and many times he went to Europe and went back home. But 4 times I invited him, and all 4 times they refused him. Okay, no problem. We will gonna respond to that question. Please stay tuned with us on the on our channel, and we'll be responding very soon on your question. Thank you very much. You're welcome so very much. She was from Iran. Of course. Yeah. So when I started talking to her, I figured that one out. Okay, Anyways, yes. so you've heard her question.
Or you want me to It rephrase the wasn't question? clear then, Okay. So basically, the lady. She said that they applied for someone 4 times and they got rejected, right? Yes. Okay. And the gentleman is like is of good standing, and he has travel history. But 4 times she sent him an invite, and four times that gentleman was refused visa. So she goes like, is there something she can do to, or contact the embassy so that like he can visit her and then go back to his country? No, they cannot contact, or she cannot contact the embassy directly. We have to know when was the last time that she applied for, or the person, I don't know, she or he, applied for the visa, and then we will get the officer notes first, and we have to know what was the reason that they refused the person 4 times, and if the last time they applied it's recently, it's less than 30 days, then we can appeal it. Okay. So, the viewers. We need the refusal letter. Okay. Yes. So, as per the response, Dr. Begin over here says that you are not a person who has invited anyone does not have any right over contacting the Canadian embassy where the visa was applied for. But what we can do, since HMB Canadian immigration firm is always here to help, so you can always contact us at our office at 416-836-9911. Our toll-free number is 1-888-855-5462. Okay. So we can help you. Too fast. You're going too fast for the toll-free number. Okay. Now we have another caller. Let's take the call. Hello and welcome to Voice of Toronto. जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए कि आपकी जो ये कंपनी है, ऑब्वियसली अभी हमें पता नहीं है, आपको हम कॉल करेंगे पूछने के लिए आपकी फीस कितनी है, लेकिन अगर किसी का इमिग्रेशन जो है, जो उनका एंटरप्रेन्योर वीजा रिफ्यूज हो जाता है, तो उस सूरत में कितने पैसे जो हैं वो उनके वापस हो जाते हैं, और कितने पैसे उनके ऐसे हैं जो कि खर्च हो रहे हैं जो उनको वापस नहीं मिलते? इसके हवाले से कुछ आप पूछ सकते हैं अपने लॉयर्स की? जी, मैं आपको आपके सवाल का भी जवाब लेके देता हूँ, आप प्लीज हमसे जुड़े रहिएगा। Okay, thank you. Okay, Dr. Helia. Yes. I think the same caller has called us back again. Okay. Right? And they have this question. He goes like, for example, any one of his relatives, he has noted down our company name and number. They'll be contacting you very soon. Okay. So they wanted to know one last thing. Is that, like, for example, if somebody applies for the entrepreneur program, either one of them. Yes. If in any case, if the business visa or the program is refused, in that case, is there a refund that you will be doing, and how much will be the charges, and how much will be the refund? We will appeal it first. What is the reason that they refuse the case? Obviously, always we have refund policy in our contract. Okay, so what would be the percentage of their answer, or like once they contact us, we will? It depends on which stage he's talking about. Okay. So if we do the business plan, we just deduct the business plan, and the rest will return it back. Okay. Or if there is a processing fee involved, no, the processing fee we cannot refund it. Okay, perfect. सो नाजरीन, अभी जिस तरह हमसे हमारे कॉलर ने सवाल किया उसका हम आपको जवाब दे रहे हैं कि
डेफिनेटली हम लोग, आप अगर कोई रिजेक्शन आती है तो हम उसको रिफंड भी लाइक उसको हम अपील करते हैं कि क्यों रिफ्यूज़ क्यों हुआ, और उसके ऊपर हम लोग आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट भी करते हैं। बट अगर जो प्रोसेसिंग फ़ीस है जो गवर्नमेंट को जाती है वो रिफ़ंड नहीं होती, बाकी जो आपकी फ़ीस है वो आपको हम लोग रिफ़ंड करते हैं। हमारी रिफ़ंड पॉलिसीज़ हैं, और वो वंस की हम लोग जब आपसे मिलेंगे तो हम आपसे देखेंगे कि किस प्रोग्राम के लिए आपको किस कैटेगरी में आता है और उसके क्या लाइक डायनामिक्स हैं। उन डायनामिक्स के बेस पे हम लोग आपको उस चीज़ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बना के देते हैं, एंड डेफिनेटली हमारे पास रिफंड पॉलिसी है और हम लोग रिफंड पॉलिसी करते हैं। वंस अगेन that's the end of the show. We're concluding the show today, and like let please me just Charles, let me just add something to it. Sure, please. You said we do investigate it. We don't do that. We appeal it through the appeal court. So we will find out what is the reason that the officer rejected the case. Exactly, that's what I meant. Like we Okay. on our own okay. investigate what's the reason for the refusal, and then we appeal it. That's what actually Yes, I said. okay. So the HMB Canadian immigration firm, 416-836-9911. Our toll-free number is 1-888-855-5462. हमसे जुड़े रहिएगा। अब अगले हफ्ते हम लोग आपके पास फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, और वो है स्टार्टअप प्रोग्राम, और उस पर हम लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।